Welcome to my YouTube channel Speak Strong English. So that today is our third class, and in this class we will discuss about the Renaissance. Okay, so that the Renaissance, which is a turning point in English history and literature. So English history and literature रे गोटे turning point होची the Renaissance, means the glory, the golden age. Okay, and also the Reformation. Okay, and it's also called the Rebirth. Okay, the Renaissance, the change, the new things what happened in here. We will go through it. Okay, so देखो थी pictures टा picture रे so that की new knowledge, writings, and also friendship, and also sea voyage देखी पड़ता सेपटे, and church. Okay, and here someone is studying about technology. Okay, and बहुत सारे जिनस like that Renaissance घटिଥିଲା new changes. So that it's from 1485 to 1660, a time of new learning and new ideas. Okay, तो एठी नुआ educations, knowledge ଆଉ नुआ thoughts, concepts तो सबुर development ହେଇଥିଲା. A period of change in religion, politics and literature. Okay, so that ଆମର जो belief system अछि बा ଆମର government अछि, governance ର, and also writing words ଯେତେ सारा literature अछि ସବୁଥିରେ ଏଠି changes ହେଇଥିଲା. A bridge between medieval and the modern England, जोटा मैं first video करते से भीतर में bridge विषय पढ़ते. So it was a connected between the Middle Ages and the modern age. The Renaissance was a major period in English history and literature. Obviously, what a major period amaro. It marked a move away from the medieval world and toward a more modern way of thinking. Okay, तो जोटा गोटे ट्रांसफॉर्मेशन होइथिला ओल्ड थिंकिंग रु न्यू थिंकिंग. लोक माने पुराना थिंकिंग बा भावना जाथिला ताकू छाड़ी की से माने मॉडर्न भावना बा नुआ थिंकिंग करबा को चलले. People began to value learning, questioning, explorations, and individual human experience. तो लोक माने एठी वैल्यू देले कहाकू ना हमर लाइक दैट एजुकेशन को वैल्यू देले, क्वेश्चन पचारिले, डाउट्स पचारिले. ओके, एंड नुआ नुआ जिनस डिस्कवरी होला, ता सहित पर्सनल डेवलपमेंट बा पर्सनल ग्रो बा पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस भितर एठी डिस्कशन करा जायछि. In England, this age lasted from 1485 to 1660 and produced some of the greatest writing in the language. Okay, so जेतु language रा development हेइतिला and ସେଥିପାଇଁ କାକୁ golden period of English literature लिखबाजे. The Renaissance is called as the golden period of English literature. Okay, 1485 end of Wars of the Roses, 1485 printing begins, and 1492 Columbus reaches at America. So that 1485 dita jaga मन रखिबो जोटा at the same time printing press start हेइतला, and also end of War of Roses 1485, and 1492 रे Columbus reaches the America. Okay, same things ready अछि. The year of 1485 is usually taken as the beginning of the Renaissance in England because the Wars of the Roses ended then. Okay, the War of Roses चलीथिला, से War of Roses एई जगह रे ending हेइथिला, and जो जोबे War of Roses ending हला सेबे Renaissance रो start हेइथिला. This brought political stability and the rise of Tudor dynasty. एठी कोन हेतला ना political stability, peace in governance. Okay, balancing government balance हेतला government, and also Tudor dynasty रो starting हेतला. Okay, so War of Roses ending, Renaissance starting, Tudor dynasty starting. Around the same time, printing helped books and ideas spread more quickly. तेणु जते लोक मानकर thinking, so that जते सारा सेमानकर thinking थिला, will power थिला. ओके, एंड अबाउट हिस्ट्री सबू जिनस विषय लिखा गला, एंड प्रिंटिंग टा हेल्प कला एथिपाई कारण प्रिंटिंग बहुत सारा कॉपीज बनैला, एंड कॉपीज गुड़ाक सब प्रोवाइड हो पारा, एंड लोक मैंने पढ़ार सुजोग पाइले, लोक मैंने बहुत सारा जिनस जानवर सुजोग पाइले. सो टुडेज वर्ल्ड जमती पॉडकास्ट आमको हेल्प करुच्ची समस्त विषय में किसी नुआ नुआ जिनस जानापी. सो आज लाइक एज दैट प्रिंटिंग प्रेस से टाइम से टाइप किसी यूजेस होता. In 1492, Columbus' voyage to the America made Europe realize that the world was much larger
than previously thought. Okay, like that ପିଲେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହ ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ରହିଲେ ସେ ଭାବେ ଟୋଟାଲ କୁହଟା ହଉଛି ମାନେ କୁହ ଭିତରଟା ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ରହୁଛି ସିଏ ଭାବୁଛି ଟୋଟାଲ ସମୁଦ୍ର ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1492ରେ ଯେତେବେଳେ କଲମ୍ବସ୍ ଇନଭେଣ୍ଟ କଲେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଲମ୍ବସ୍କୁ ସୋ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ନା ୱାର୍ଲଡ ଏଇଠି ସୀମିତ ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଗକୁ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଟ୍ୟୁଡର ରୁଲ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ପରେ ଟ୍ୟୁଡର ରୁଲ୍ କଲେ ହେନରୀ ସେଭେନ୍ gave England stability balance ମାନେ ହେନରୀ ସେଭେନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଏଠି ରହୁଛି ଆଣ୍ଡ ହେନରୀ ଏଇଟ୍ became the most famous Tudor king ତାଙ୍କ ପରେ ଏଇଟ୍ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ the Tudors ruled after civil war like that ଯାହା ଯାହା ଅଛି ପଢ଼ିଦେବ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପିକ୍ଚର ଦେଖିଲେ ଯାହା ଏଇଠି ଲେଖା ବି ସେଇଆ ଅଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ The Tudor dynasty began after years of conflict, struggle between rival and royal families. Henry VII restored order and strengthened the monarchy. Okay, ତେଣୁ ସେ restore order stroke restore କଲେ and also जो किंग्स पावरଟାକୁ ସେ ନିଜେ ହାତକୁ ନେଲେ କିଏ ସେ ନା ହେନରୀ ସେଭେନ୍ monarchy ବା କିଙ୍ଗ୍ସ ପାୱାରକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ his son Henry VIII became one of the most important rulers in England history because he changed the religion of the country. तो तांको परे बा हेनरी सेभेन मोनार्क रूल निज हाथକୁ ନେଲେ तांको परे तांको पुओ हेनरी एट जे किंग हेले एंड किंग हेला परे पूरा इंग्लैंड रो टोटल रिलीजियन बा रिलीजियस रो जो थिला तांकर ट्रेडिशंस को ताको पूरा टोटल चेंज कर देले वन डिसीजन एंड द होल सिस्टम चेंज्ड द ट्यूडर पीरियड गेव इंग्लैंड ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ यूनिटी एंड आइडेंटिटी तो ट्यूडर पीरियड इंग्लैंड को स्ट्रॉन्गर कला एंड इंग्लैंड को यूनिट कला एंड इंग्लैंड रो आइडेंटिटी नहीं आसला बा सेल्फ रिकॉग्निशन कला बा इंग्लैंड को डेवलप करे बारे ट्यूडर डिनास्टी रो बहुत बड़ भूमिका रही सो देन आई एम हेनरी एट ब्रोक विथ द पोप ओके हेनरी एट और पोप को विषय कथा विषय पढ़िबो तो हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च पोप एंड इंग्लैंड बिकेम द चर्च ऑफ इंग्लैंड नेशनल चर्च so that पढ़िबा हम हेनरी एट और पोप को विषय कौन कौन हेतला एंड पोप इज कॉल्ड एज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च रो जे हेड थिले ताको हमें पोप बोली कहूचे ओके सम थिंग्स Henry VIII and the Reformation, one of the biggest turning point of the Renaissance was the English Reformations, by religious reform movement. Okay, कौन है इतला से religious movement भी सर पढ़ेगा. Henry VIII wanted a divorce, but the Pope refused. Henry VIII चाहेले जे legal separation, से चाहेले जे से church रो अलग हवा पाएंगे. But Pope तंको मना करले. In response, Henry broke away from the rope and made himself head of the Church of England. Okay, so that Henry कौन करले से separate है वाले रोम रो and निजे like that head of the church रो निजे head है वाले. This changed religion, politics and culture in England. एटा England रो religion, politics and culture को change कर देथिला. The closure of monasteries also had huge effect because monasteries had preserved learning books and art for the centuries. तो जो monastery थिला that से कौन preserve करथला जे हमरो books at centuries ला से preserve करके सब जिनिस को रखे जे. Okay, Protestant ideas, reformed beliefs were spread in England. Catholic authority was challenged. And people began to question old beliefs. Okay. Protestant ideas, Catholic authority was challenged. देखिए कौन होचे. The Reformation changed how people thought about God, the Church, and the salvation. Protestantism spread across England, and many old Catholic beliefs were questioned. This created conflict and uncertainty, but it also encouraged people to think more independently. Literature from this time often reflects this struggle between old and new beliefs. Okay,
जो न्यू रिलीजियस आइडियाज आसिला लोक मैंने क्वेश्चन करवा स्टार्ट कले कारण प्रीवियसली लोक मैंने क्वेश्चन करू नथिले लोक मैंने भाबुथिले सेते बेले गॉड इज एवरीथिंग बट वर्तमान लोक मैंने भाबिले जे पीपल हिमसेल्फ द ह्यूमन हिमसेल्फ इज एवरीथिंग सो लाइक दैट एटा गोटे क्वेश्चन हेइथिला बा गोटे डिफरेंशिएट हैला ओल्ड एज आउ न्यू एज भितर ओके प्रोटेस्टेंट आइडियाज humanism Humanism was one of the most important ideas of the Renaissance. It encouraged people to study classical literature and philosophy from ancient Greece and Rome. Okay, तो ये लोक मान को एनकरेज करा गला जे तुम क्लासिकल लिटरेचर गोटा पढ़ो लाइक दैट कि फिलोसफी पढ़ो एंड जोटा लिटरेचर एंड फिलोसफी पढ़ो जोटा हमर ग्रीस आउ रोम रो आस्तलो ह्यूमनिस्ट thinkers believed in the value of human learning, reason, and potential. Because of this, writers began to focus more on human life and individual choice and personal experience. Okay, from God-centered to human-centered thinking. Okay, so that like that, एटी फर्स्ट होची लोकमानंकु encourage करागला जे ग्रीक आउ रोम रो लिटरेचर एंड फिलोसफी बुक्स को पढ़िबा पाइंगा एंड ता सहित लोक मैंने सब जिनस लॉजिक खोजिले एबिलिटी खोजिले ओके एंड ह्यूमन लर्निंग कैपेसिटी रो सेठी टेस्ट हैला एंड लोक मैंने लाइक दैट कि पूर्व थे गॉड सेंटर्ड गॉड को पूरा अंध भाव विश्वास करते वर्तमान लोक मैंने निज को विश्वास कले ह्यूमन को ह्यूमन सोसाइटी को विश्वास कले ह्यूमनिज्म बिकेम इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट आइडियाज राइटर स्टडीड ह्यूमनिज्म बिकेम सेंटर ऑफ द थॉट्स ओके सो दैट एपटे राइटर को देखो राइटर मैंने जिते से मैंने निजे लिखुले बट एबे समस्ते लिखा स्टार्ट करदे साइंस एंड डिस्कवरी द रेनेसांस वाज आल्सो अ टाइम ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी तो बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरीज होइतला रेनेसांस टाइम रे exploration opened new parts of the world and thinkers began to challenge older ideas about how the universe worked तो एटी लोक मैंने से जिनस जानवा चाहिए यूनिवर्स एक्चुअली केमती वर्क करुचे जमीक आम गैलेक्सी हो सन स्टार व्हाट एवर मे बी बट स्टिल लोक मैंने रीजन सो हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग द यूनिवर्स इज वर्किंग यूनिवर्स केमती वर्क करुचे लोक मान मध्य से क्वेश्चन आसला दिस गेव पीपल ए न्यू सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वंडर तो यहीटा लोक मान भितर गोटे जानवर इच्छा डिजायर टू नो जानवर इच्छा एंड अमेजमेंट एटा स्टार्ट होगा यूनिवर्स आमर केमती चलुची ओके साइंस जियोग्राफी ऑब्जर्वेशंस became more important तो साइंस इंपोर्टेंट हेगला जियोग्राफी इंपोर्टेंट हेगला ऑब्जर्वेशन भी इंपोर्टेंट हेगला ओके एलिजाबेथ वन ruled 1558 to 1603 and like England became more confident and powerful the defeat of the Spanish Armada was a great victory the Elizabeth age which was started from 1558 to 1603 The Elizabeth is often seen as the high point of the English Renaissance. Elizabeth I brought stability after years of religious conflict. So, amaro Tudor King Henry VII, Henry VIII, then Elizabethan age. So, I brought stability after years of religious conflict during her reign. England became stronger and more confident as a nation. The defeat of the Spanish Armada gave England a strong sense of national pride. So Henry VIII का पर जिते Henry VIII का टाइम रे जिते रिलीजियस मूवमेंट्स गोटा स्टार्ट हो गला तो कंटिन्यूअसली चलथिला एंड जोटा बैलेंस हला को टाइम रे ना एलिजाबेथ को एज रे Literature of the period, the Renaissance is famous of its great writers. Shakespeare became the greatest dramatist, playwright. Shakespeare तंगर greatest dramatist थिले Elizabethan period रे. While others enriched poetry and prose, this was also the great age of literature. जोठी हमें entertainment मिलुथिला तासे त learning together एकाठी मध्य लोक माने पढुथिले नवा नवा जिंस सिखुथिले. Writers used English in fresh and powerful ways. Like that Shakespeare, Spenser, Sidney, Donne and Milton, like that drama, poetry and the prose ये सब जिनसे लिखा होता है. Why the Renaissance matters? It changed religion, politics, science and literature. It helped from modern English identity. It laid the foundation for later literature. Why the Renaissance matters? The Renaissance matters because it changed almost every part of life. So human ro external, internal सब प्रकार जिनस को चेंज कर देथिला. It transformed the way people thought about religion, authority, knowledge and human life. Okay.
अवश्य लोक मानकर माइंड सेट चेंज है लोक मान थॉट आसला रिलीजन अथॉरिटी नॉलेज ए सब जिन जो बिलीफ सिस्टम थिला प्रीवियसली ताको धीरे धीरे चेंज होबो लागला फाइनल लाइन दिस इज द पीरियड वेयर मॉडर्न थिंकिंग वाज बॉर्न तेणु रेनेसां होची से पीरियड जोठी मॉडर्न थिंकिंग रो बर्न हेचे बा मॉडर्न थिंकिंग स्टार्ट हेचे ओके सो दैट रेनेसां कंप्लीट हैला नेक्स्ट क्लास में रेनेसां पोएट्री पढ़िबो एंड नेक्स्ट क्लास में रेनेसां ड्रामा पढ़िबो ओके थैंक यू